an interpretation will have to be given to the specific data which has been collected and analyzed in a specific way. Now, I'm going to talk about the analysis aspect, and the subject is analysis of variance, which is one of the most utilized, statistical aspect. And next slide. Okay. See, what is analysis of variance? It is a parametric test. Let us understand what does this parametric test mean. See, the test could be of two types, parametric and non-parametric. All those statistical analysis in which mean value, that is arithmetic mean, median or mode, or standard deviation, standard error, variance, if these values are required, that is values of central tendency and values of dispersion, if these values are required, then that test becomes parametric test. So ANOVA, T test, J test, F test, these are actually parametric tests. And see, chi-square test or Mann-Whitney test or Kruskal-Wallis test, these are non-parametric tests, because in case of non-parametric test, the mean values or other parameters of descriptive statistics are not required at all. So this ANOVA is a parametric test. In this case, we need actually mean value. We sometimes in calculation we need standard error or standard deviation values also. So that is why it is a parametric test. And we apply this test when there is more than 2 samples. When we have collected samples from the population and those samples are more than 2, then we want to see whether these samples have come from the same population, or they are same in nature, or they are significantly different from each other. And for that purpose, we apply analysis of variance. This could be one way or two way. ANOVA could be of two types. When we try to study a single parameter and difference among those samples, considering a single parameter, then that becomes one way ANOVA. And when more than 2 different kinds of phenomena are there, happenings are there, or subjects are there, in such case we apply 2, then that becomes one way ANOVA. Different kinds of phenomena are there, are happening, in such case we apply two-way ANOVA. So this I'm going to explain this aspect by taking certain examples. Suppose we have collected data from 3 separate areas, and this data is in the form of sample 1, sample 2, and sample 3. In sample 1, we have variables or values like x1, x2, x3, x4, x5. These are the variables. These are the values which have been collected. You can say 5 individuals have been observed, or 5 different types of experimental results are there. So in such case, its total will be taken, and number of cases observed in sample 1 are 5. So n is equal to 5, and then samples total could be there. Then there is another sample, that is x2. Here also you have values like x6, x7, x8, x9. Total number of cases considered here are 4. Then its total you can obtain, and average value can also be calculated. Likewise, in sample 3, there are again 5 cases. So we have to actually arrange the data in this manner in the form of columns, and their number of cases and total will have to be known. Then we actually need this capital N is there. Capital N is the total number of individuals considered. Total number of individuals considered here in this particular case is being shown as 14.
because sample 1 contains 5 individuals or 5 cases or 5 variables. Sample 2 contains 4 variables. Sample 3 contains 5 variables. So this way total becomes 14. In case of ANOVA analysis, in ANOVA case, we need actually grand total also. So the grand total means total of all these 14 variables. That is referred as grand total. Then let us see what are the steps which we employ if we are manually doing it. I will show how to do certain cases with the help of Excel program, but I want to make you acquainted how manually we can do it, because it is quite simple to follow it manually. First of all, we actually calculate the correction term. So finding correction term is the first step. In correction term, what we do is GT is square divided by n. GT is what? It is grand total. I just told you that the total of all the variables, that total will be squared, and the product will be divided by total number of individuals. So GT squared divided by n. Then in the second step, we need SST value. SST stands for sum of squares of total values. So total sum of square is called as SST. Now this SST can be obtained by making a square of every individual value will be squared, their total will be obtained, and from that total the correction term value will be deducted or it will be subtracted. So this is SST. And then SSB. SSB stands for sum of square between the samples. Okay, sum of square between the samples is SSB. Now this SSB can be obtained. Again, I'm back to tell how this SSB will be obtained. In case of SSB, see the total value of every total means total of sample 1. This will be squared. This value will be squared, and it will be divided by n5. N5 means number of variables present in this particular sample. Then it will be added with the next one, that is the sample 2 total. It's square divided by total number of cases, that is n4. So that way SSB will be calculated. Here sum of each group is squared and divided by its n value, and total is obtained. This, from this total, the correction term value will be deducted or that will be subtracted. Then we can calculate the third step, and that is SSW. SSW, that is sum of square within the samples. This will be calculated by SST minus SSB. Okay, so whatever SST value is available, from that SSB will be subtracted. Now only these 4 steps are important. After that, rest of the things you can do this table. See what is shown here. This is the main table we obtained, and please go through this table very carefully because it will give you information about everything. SS, that is sum of square, and here in source of variation between is written. So this is SSB. SSB means sum of square between the samples. I just told you that this can be obtained by doing the square of every individual sample total, and then that value will be divided by its n. Likewise, every sample's total and division of n will be totaled, and from that the correction term value will be subtracted. Then within it is SST minus SSB, and total is actually total of SSB as well as SSW. Now, degree of freedom, let us see how this will be calculated.
this degree of freedom is C minus 1. That's column minus 1 for SSB. Column minus 1, if the columns are there, then this C minus 1, that will be the degree of freedom for SSB. The degree of freedom for within will be minus C. That is total number of cases minus number of columns. So that way you will get the degree of freedom for this SSW. And degree of freedom for total will be minus 1. Then mean of square that can be Excuse me, sir. Wise, थोड़ी सी sir clear come on. By its degree of freedom. Excuse me, sir. Actually, Wise sir बहुत clear नहीं आ रही है जी सर. Slides तो बहुत बढ़िया दिख रही हैं सर. Slides बहुत बढ़िया आ रही हैं. हाँ, बहुत बढ़िया दिख रही हैं सर. आवाज लेकिन सर बीच-बीच में ऐसे ब्रेक. हमारे यहाँ से प्रेजेंटेशन का भी नहीं है. एक मिनट. स्लाइड ठीक है तो बायस बहुत क्लियर नहीं है. नहीं सर, आ भी रही है बीच-बीच में हो रही है. बात क्या आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, बीच-बीच में ब्रेक हो जा रही है बस. हाँ, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम यहाँ पे है थोड़ा. कुछ बैंडविड्थ की दिक्कत है सर. ठीक है सर, कंटिन्यू करिए. मेजर प्रॉब्लम. अच्छा, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन बहुत क्लियर. स्क्रीन पे जो कॉर्नर पे आता है, ये मतलब बोलते हुए दिखता है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे. एनीवे, अच्छा, अगर बीच में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, फिर हम इसको चाहे तो रिपीट करेंगे, क्योंकि बड़ा यूजफुल है ये, बच्चों के काम आएगा. हाँ सर. तो देखिए, देन see, MSW means mean of square within the samples. This can be obtained by dividing SW by its degree of freedom. Now, since we have MSB as well as MSW values, so dividing an MSB by MSW, one can get the F value. This F value will be used for further analysis, because we need finally this F value. P stands for probability level, whether the probability is less than 5% or more than 5%. If it is more than 5%, we will accept the hypothesis, and hypothesis will be whether these samples are similar in nature or they are significantly different from each other, particularly their arithmetic mean. Then F critical, that is stable value. F critical stable value. I will tell you how this stable value will be obtained. See the next slide. Let us see the F table. This is F table, and at 5% level, the values are given. For example, if 3 samples are there, then the degree of freedom will be 2. And since 14 total individuals are there, so 14 minus number of columns, so 3 columns are there, so it will be 11. So 2 and 11 degree of freedom means these 2 degree of freedom will be used for the purpose. And at 2 and 11 degree of freedom, the value is 3.98. See here on the upper side, degree of freedom are there 1, 2, 3, 4. These are degree of freedom numerator. And on the left side, if you go vertically, again mu is there. So these are degree of freedom values. So at 11, here at 11 and 2, what we find, the value is 3.98. It means 3.98 will be the table value. You have table value at 5% level. Okay. So with the help of this table, we can see that what is table value at a specific degree of freedom. Now you can see there is a question
Not orange, it is visible now. It is visible, sir. We can see, sir. Slide we can see, sir, but this voice is not so clear. Only problem is the voice. Voice, sir. Sometimes, sir, voice is very clear. When you bend your head, sir, bend your head, then it becomes more clear. Okay. Okay, because let me use one device. If it improves, then okay. So, see this particular page. Hello. Hello. Yes, sir. Now some improvement is there. Hello. Yes, sir. आवाज आ रही है, sir. So, okay. So there is a question now. I hope that we can solve this question by manually, and I will be taking up through computer program. The following table shows the size of particular fish species collected from 3 different ponds. By applying appropriate statistical test, find out that the average size of fishes of these ponds do not differ significantly. So there are 3 different ponds: pond 1, pond 2, and pond 3. There is some improvement in the voice because I'm using. Hello. Yes, sir. There is some improvement, sir. Okay. Then. So 3 ponds are there, and from these 3 ponds, suppose a particular species of fish which is quite small in size, that is being collected, and 5 fishes were collected from pond 1, 4 from pond 2, and again 5 from pond 3. Number could be same. You see, from all the 3 ponds, one may collect same number of fishes. So variation may be there. Now, what we have to know whether the mean size of the fishes collected from these 3 ponds are same or they are significantly different from each other. That is our main aim to test. So HO, that stands for null hypothesis. Null hypothesis means we hypothesize that there is no variation. So there is no variation, suppose, or no difference in the mean size of the fishes collected from 3 ponds. This will be our null hypothesis. Then our alternate hypothesis will be that there is difference. There is difference in their size. So now let us see how we shall be doing it manually. As I told you that first of all we will calculate correction term. This correction term will be equal to grant to square divided by total number of individuals considered. So when we take the total of all these 14 individuals, because in this particular case n is equal to 14, and the grand total that comes 66. So 66 into 66 divided by 14, and then the value comes 311.4. For SST, what we are doing, that every value is being squared. That is 4, its square will be 16. Then second value is 3. So this 3 is being squared and its value is 9. Again 16. So we are actually making a square of every value. That is 4 square, 3 square, 4 square, 3 square, 5 square. Every value is being squared. Here 5 square, 5 square. And when all these values are being squared, and then minus correction term, that correction term value is 311.4. So the SST value then comes 34.86. So 34.86 is the correction, sorry, SST value, that is sum of square of the total. Then next step is SSB. I told you that for SSB, the total of each column will be squared, and then it will be divided by the number of cases plus next sample, its total number of cases divided by means total, its square divided by number of cases. So when we are doing this,
and finally minus correction term, we are getting 12.86. And in fourth step, we will be getting SSW, that is 34.86 is the total SST minus SSB, and we are getting here the SSW value. Now these values will have to be put in the ANOVA table. So if you see ANOVA table, here again SS is written, SS stands for sum of square, and between that value is 12.86. We have just calculated here. So now this value comes here 12.86. Then SSW value 22 will be there. Then its total value is written here. After that, we have to find out degree of freedom, that is column minus 1. So that is, there are 3 columns minus 1, that becomes 2. Then degree of freedom for, I'm sorry, for this SSW is 11, because total 3 means total 14 cases are there and 3 columns are there. So 14 minus 3, that will be 11. Again, the total degree of freedom will be 13, because n minus 1 will be the degree of freedom for total. MS value 6.4 we are getting by dividing 12.8 by 2. So we are getting 6.4. Then 22 if divided by 11, it gives 2. So MS values will be obtained that way. And F value will be obtained by dividing the SSB, that is 6.4, by SSW by 2. So if 6.43 gets divided by 2, it will give 3.21. And the table value is 3.98. I just told you that at 2 and 11 degree of freedom, the total, the table value will be 3.98. So what we are observing, that this F critical or table value 3.98 is more than the calculated value. And if it is more than calculated value, then we will accept the hypothesis. At this point, one should be very much careful that whether the calculated value is less than the table value or it is more than the table value. If the calculated value is less than the table value, then one will accept the null hypothesis. And if it is more than the table value, then one will reject the hypothesis. So here in this case, what we observed, that the probability is more than 5%. So we accept the hypothesis. And we can say that there is insignificant difference in the mean fishes collected from the treated ponds. And if the same values you will be putting on some statistical programming, means with the help of a computer or statistical tool, what you will observe, these two, particularly lower one table, will be appearing. It is exactly the same table which I showed you, that was done manually. Exactly the same figure, S1, S2, S3 are actually pond 1, pond 2, pond 3. So exactly same values I have put here, and you can see that in the 3 columns are there, their counts are given. Sum of the first column was 20, second 16, third 30. Their averages are 4, 4, and 6. And we observe that there is insignificant difference between 4 and 6. So this is our final conclusion, that the fishes which have been collected from these 3 ponds, they are not differing in their average mean size. Okay, so Dr. Aryan Singh. Yes sir. Hello. Yes sir, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, तो ठीक है ना, ये समझ, मतलब आवाज आ रही है, साफ समझ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, पहले से बेटर है सर, बीच बीच में अभी भी सर ब्रेक कर रही है। अच्छा, तो लेकिन समझ में आ रहा है सर, इतनी आ रही है, हम लोग समझ जा रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं सर। फॉलो कर सकते हैं ना, मतलब हाँ इतनी आ रही है सर, बिल्कुल। हाँ ओके, समझ में आ रहा है सर। तो ओके, सो
Now, exactly the same way, I have taken another example here. Means I have manually done it. All those things which I just explained, exactly the same thing is there, but only thing is that there is a control group, and then there are three, treatment groups are there. Their values are given here, and I have collected correction term, then SST, SSB, SSW values have been collected, and then finally this ANOVA table has been constructed based on SSB, SST, SSW values. Their degrees of freedom are given. Now what I am showing it that in this particular case, we are observing that there is significant difference among the mean values. So remember, if there is significant difference among the mean values, then we can go for post-hoc analysis, post-hoc test. And in case of post-hoc test, actually, we will be able to know that which of the two pairs show significant difference. Like in case of control, the mean value is 2. In case of treatment 1, mean value is 4. So we are not knowing that which of the two mean values are different from each other. So whether there is significant difference between 2 and 4, or between 2 and 4 and 4, we are significant difference between 4 and 4. But we have to know whether 2 and 4 are significantly different because the probability is less than 5%. It means significant difference exists among the mean values. For that, we go for post hoc analysis, which is also referred as multiple comparison test. Through this test, we shall be able to know that which of the two pairs are significantly different from each other. So this test helps us to know whether there is significant difference among the mean values of the samples. It is performed to observe that which group pairs are showing significant difference. And we have to know that exactly how many comparisons will be possible. That we can know by calculating it with the formula C into C minus 1 by 2. For example, in this case, there are 4 columns. So 4 into 3 by 2, that is 6. It means total 6 comparisons will be possible. So if you have suppose 3 columns, so it means 3 into 2 by 2, that will be 3. It means 3 comparisons will be possible. In this particular case, which I showed you just now, 4 columns are there. So 6 total comparisons will be possible. Now see here, we can do it manually as well as through computer program. And the manual calculation is quite simple. What I have shown here, that we have to calculate critical difference, that is referred as CD. And this critical difference is equal to square root 2 into MSW value, whatever MSW value is available to us. That will be divided by number of columns. And then that value will be multiplied with the table value that of t test. T stands for t table value, which is given at 5% level. But the question is, what would be the degree of freedom? Degree of freedom will be the degree of freedom of MSW or SSW. Whatever degree of freedom of SSW is there, that will be used to know the degree of freedom, and at that degree of freedom at 5% level, the t table value will be taken. So in the next case, you can see how this is being done. See, this is t table.
and from this table we shall be able to get the specific value at 5% level. If degree of freedom is 10, then at 5% level that value is 2.228. So this 2.228 value will be taken. I will show. Now here in the lower half you can see I have shown how this post hoc or multiple conversion test will be done. Since in this particular case 4 columns are there, so 4 into 3 by 2, that is 6 comparison will be there. Then I have written the formula that is used to have the critical difference. Now here I have calculated the critical difference. This critical difference has come 1.675. So in this case, what we will be doing, we will first see the difference between the two columns, their mean values. Like, hello, hello. आवाज बहुत बढ़िया आ रही है सर. इट इज फार बेटर नाउ सर. Okay, बहुत अच्छी आ रही है okay. सर. इसमें आवाज बहुत क्लियर है सर. Okay, so I'm continuing now. What we are observing here, that between first and second column, the mean values were actually 2 and 4. So when we get the difference of 2 and 4, it is coming 2. But the critical difference is 1.675. So our calculated value is less than the difference of the two mean. So what we say, that yes, there is difference. If the real difference between two column is more than the critical difference, then we consider significant difference. So between column 1 and column 2, there is difference of 2, and that is why it is showing significant difference. You know, the mean value of column 1 is 2, whereas column 3 is also is 4. So difference is up 2, so there is significant difference. The mean value of column 1 is 2 and column 4 is 6. So there is difference of 4. You can say that yes, there is difference. Now, but the difference between mean values of column 2 and 3 is 4, 4 means 0. So in this case, there is no significant difference. So it is also quite easy to know that which of the two groups are showing significant difference and which groups are not showing significant difference. It's quite easy to do it, and this particular calculation is quite useful because simply knowing that ANOVA shows significant difference does not serve the purpose. One has to be aware that which of the two groups are showing significant difference. Okay, so that is why this post hoc test that becomes quite essential, quite important, and presently every paper in which ANOVA is applied, post hoc analysis becomes essential. That becomes essential means they will accept, or you will be able to explain it properly when you have a clear-cut idea that whether the experimental groups are different from the control one or not. Like in this case, you see there is control group and there are treatment groups. So you can say that all the control means treatment groups, they are different from the control. Like control group is, it has its mean value 2, whereas rest of them have mean value 4 and 6. So you can say that there is significant difference from the control. So that is why this post hoc test becomes very important or very essential. Then what I have shown here is exactly the same value here. Control 1, then treatment 1, treatment 2, treatment 3. So 4 columns are there, and in these columns exactly those values which were there, their average values are given. Then SD values which you can calculate by applying this descriptive statistics. There is one option, I will show you how to do that. So through descriptive statistics, standard error, and based on these values, construct the
Okay, you can construct this graph. This graph is actually showing the mean values. Control T1, T2, T3 means based on the mean values or arithmetic mean or their averages. These columns are constructed. The bars are constructed. Then, based on standard error, one can show the bar lines, which will show actually the level of standard error. And through the stars, I have shown the significant level, that is from control T1 and T2. They show significant difference, and that significant difference may be less than 5%. But then control and T3, there may be less than 0.001 or even less than 0.01% difference. So on that very basis, you can show that which of the groups are showing significant difference, which are showing highly significant difference. So your entire data gets depicted in this particular form. Then I'm showing that in the computer programs, there are certain commonly used post-hoc tests. I have just showed you manual method of calculating this post-hoc analysis. But there are in the computer programs, there are certain tools like Bonferroni test, or Tuckey's test, or Newman-Squibb's test, or Dunnett's test, or Fisher's least significant difference test. So these are the statistical tools which are available in SPSS or in social science study. Statistics means that is another one which is different from SPSS. And there are other tools also. Within those tools, most of these are given, and all these tests are actually based on student t-test, because in case of student t-test, we want to see the difference between the two means. So these are mainly based on unpaired student t-test principle. Bonferroni test and Tuckey's test, these are very highly used tools by biology persons. Anyway, we can apply it. Now I have shown you a particular case, like suppose we want to analyze our data, and the data is regarding the diastolic blood pressure of individuals doing different professions. So we have the diastolic blood pressure of teachers, then doctors, judges, and businessmen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 individuals from each group. See here, 8 individuals from each group have been actually considered for this study. 8 teachers, their diastolic blood pressure was measured. That is shown here. Doctors, judges, businessmen, their diastolic blood pressure was measured. And you can put your data in the Excel sheet in this particular manner. Then you want to analyze it. So you will be going to the data. Means on the upper side, you can see here, data is written. So we have to click the data. And when you click it, you will find on the right side in the corner, you can see data analysis is appearing. So this data analysis, this particular thing will appear, and you have to click it here. When you will click data analysis, then a box will appear in this Excel sheet. And in this box, so many parameters are there, statistical parameters are there, and you can use one-way ANOVA, that is single factor. Single factor means one-way ANOVA. We are going to consider a single aspect, and that aspect is whether there is significant difference in the diastolic blood pressure of the individuals doing different professions. So, and then you will click here single way factor, and you will do OK. In the next, you can see that input range that is coming. In input range, we will be selecting, we will select this entire quantitative value. Only quantitative values will have to be selected.
So when you will select quantitative values, then all such values will come in the input range. Okay, so we have to simply select and it will automatically come over there. And then you will click the OK button. When you will do that, here you can see all these quantitative values have been selected. And then from corner means left corner to the lower side, all these values have automatically come to the input range. And then you can again click OK button. So you will get this table, exactly the same table which I showed you so far. You can see the all the characteristics, like 4 groups are there, their number of individuals considered, then sum of each group that is given, average diastolic blood pressure is also appearing here. And in the lower side, if you see the ANOVA table about which I just told you, we have to mainly see the F value and the F critical. F value is 9.069 and the F critical value is 2.94. So what we are observing that the calculated value, that is 9.07, is very high than 2.94, that table value. F critical stands for the table value. This table value one can find by seeing at degree of freedom 3 and 28. At 3 and 28, the value will be 2.94 at 5% level. So we are getting very much difference among the mean values, that's pressure mean values. Okay, so Nakaran Singh. Yes, sir. Hello. Yes, sir. आवाज आ रही है, sir? It's going on. Yes, sir. It is going on smoothly. Yes, yes, sir. Time to time, time to time, I have to verify whether it's going on smoothly or means I'm speaking. No, sir. Now voice is much not better, being sir. gained. Much better, sir. Everything we can follow. We can hear clearly, sir. Now, please continue, sir. Okay then. Okay then. Okay then. Okay then. So now again the same values are there. We have obtained the average diastolic blood pressure of these 4 different kinds of in groups. Their SD values are there. Standard error value that is obtained, and based on the average and standard error values, we can construct this bar diagram. So in this bar diagram, you can see the average diastolic blood pressure of teachers, doctors, judges, and businessmen. And the standard error values are showing on the upper side. I have not shown the significant difference, but yes, significant difference will definitely be there between teachers and business group, because post-hoc analysis I have not done in this particular case. And that you can do and see that which of the 2 groups are showing significant difference. But we are observing that the average diastolic blood pressure of teachers, that is 0.5, and it is coming 91.12 in case of judges. So there may be significant difference between the average blood pressure of teachers and judges, as well as between teachers and businessmen. But that one can know by doing post-hoc analysis. Here that I have not done. Now let us make me aware you people about the use of this Excel program for analyzing all such data. What you will do, you will have to simply open the Excel sheet. And in this sheet, you have to put the data which you have collected. This Excel sheet will be appearing, and then you will go to the data that will be appearing on the upper side. When you will click it on the right side in the upper corner, data analysis, that will be visible. If it is not visible, then you can see that how data analysis can be can be loaded in the computer. Means even that means on internet will provide this information. So this data analysis will appear over there.
When you click this, then as I told you, the box, you have already put these values and you have actually put the data analysis. You have clicked over there. This box has appeared. And in this box, I have put certain values in 3 columns, A, B, C, 3 columns. These are the values. And what I'm going to do, I'm going to show you how descriptive statistics will be done. Descriptive statistics, know the average values, the standard deviation values, standard error values, range, skewness, kurtosis, all sorts of information will be available, particularly those informations which are needed for further calculations or further analysis. For that purpose, this descriptive statistics can be done. So if you see the values, what I have shown here, that in the first column, all the 5 variables that are 10, 10, 10 means they are exactly same. Whereas in second column, the values range from 5 to 16. In the third, they range from 2 to 25. So if I go for descriptive statistics and do it, then so all these 3 columns have been selected, and in the input range these values have come. Then when you click it, you got this table. In this table you can see the column 1, column 2, column 3. Mean values are there. Mean value of all the 3 columns, that is 10. 10 is mean for all the 3. But what we observe that standard error and deviation in the first case is 0 because all variables are exactly same. But the variables in column 2 are different from each other. So they are 5 to 16. Although the mean value is exactly same, but other means standard deviation, variance, these values are there. It means this data contains variation. So by seeing this, you can see that whether the variables, they are similar in nature or much difference exists in them. For getting the percent level of variation, you can calculate coefficient of variation, CV, that is ESD divided by mean into 100. So level of means consistency in the data could be known. So this will help you, and you can use this descriptive statistics information for constructing the bar diagrams also. Now, for single factor, once again I'm repeating, if you have to do ANOVA single factor, then you will click OK button. You have to put all those values in the Excel sheet. These values are there like control 1, control, treatment 1, treatment 2, and you are going to analyze it single factor you will be doing. So here all these values are being selected and they will automatically come in the input. Then when you will click, this ANOVA table will be appearing. So I have told you enough about it. Now I'm going for the two-way ANOVA, because up till now I was explaining about one-way ANOVA. We are going to learn two-way ANOVA. That is, this two-way ANOVA could be of 2 types. One is without replication and other one is with replication. So let us see what does this mean. And it is also quite easy to do. Here in this case also, you have gone to the data analysis. Now this data analysis shows single factor, that is one way ANOVA, then 2 factor with replication, then 2 factor without replication. So we are going to learn 2 factor without replication. I've taken a particular case here. First, let us understand that what does this show. See, here 2 factors are there. Suppose there is a specific species of insect which you are rearing in your laboratory. We are culturing Drosophila flies. So we have
suppose done experiments by involving 3 different types of flies. Wild type flies means those flies which are normal, then those flies which are mutant types, and then hybrids. Hybrids means they have been obtained by making cross between wild and mutant. So 3 different categories are there, 3 different columns are there, and those means females, they have laid their eggs. We have actually counted the number of eggs laid by wild type females, mutant females, and hybrid females. Now we have reared those flies at temperature 20 degrees Celsius, at temperature 25 degrees Celsius, and also at temperature 30 degrees Celsius. So what is being shown here, that 3 different kinds of stocks are there. Then they have been reared in 3 different varying temperature. We have to see whether produced by females of these 3 stocks varies significantly, means number of eggs laid by these 3 different types of stocks are different, significantly different, and whether temperature has its effect, whether 20 degree, 25 degree, 30 degree temperature, that also influence the egg laying, number of eggs laid by the flies. So 2 parameters we are going to consider. Temperature are shown in rows, whereas the types of flies, they are in columns. We will be going to data analysis. Again, we will go to data. On the upper side, you can see when we will click to data, then data analysis will come. And then when we will click that data analysis, this box will appear. We will click 2-factor without replication. And then what will be there? All these, numerical values or quantitative values will have to be selected. When you will select it, then the entire quantitative value will come in the input range. Then you have to make OK. When you will click OK, you will get this particular table. And in this table, particularly in the upper table, you can see there are 3 rows. Rows indicate about temperature. So average number of eggs laid at varying temperature is given. And in column 1, 2, 3 means 3 different kinds of stocks are there. So the average number of eggs laid by these 3 different kinds of stocks is also given. So in the ANOVA table, you can see that what we find, the calculated value, F critical and F calculated values are here in the table. This F calculated value is 66.5 and the critical value is 6.9. It means there is very high difference, difference among the mean values. You can say rose means the temperature. So temperature that has its effect on the egg laying. Likewise, if you see the columns means wild type, mutant and hybrid. In this case also, you find that there is significant difference because your calculated value is very high than the table value. So there is very significant difference. And that yes, wild type, mutant and hybrids, they have significantly late varying number of eggs. So that way you find that both factors influence the egg laying or number of eggs laid. Means this particular aspect is being affected by both, that is types of stock as well as the temperature. Then I'm coming to two-way ANOVA. So it's still okay. It's fine. Karan Singh, everything is fine. Yes, sir. It's very fine, sir. Very interesting, sir. Please continue. Okay then. So now it is final phase, two-way ANOVA.
with replication. So in this case, what I'm going to show you, that suppose you have repeated the experiment. You have done this experiment thrice. So with replication means we have actually done it in different, time, during different period of time, but exactly same parameters were taken, or you have taken average number by doing this experiment three times. So what we did, we actually recorded the number of eggs laid by wild type of females, and that is recorded thrice. So at one point of time they laid 20 eggs, then 122, then 125 eggs, but that happened at the temperature 20 degrees Celsius. Then the number of eggs laid by mutant when the experiment was conducted thrice. So you have since conducted an experiment several times, you can put those values, and so you are actually replicating, but the number of replicates will have to be exactly same for all the cases. So this thing you have to take care. And here mutant, wild type, hybrids, their number of X lates are being shown. Then temperature is 20, 25, and 30. And since you have repeated experiment thrice, so all such data that has come. Now again, you have selected the entire, but here you can select even the qualitative, aspect, that is wild, mutant, hybrid, temperature. This portion will also be selected. There is no need, means when you will select only the quantitative values, then it will not accept. You will have to select the entire aspect, that is the types which are there in column, and also those qualitative values like temperature which is there in the rows. And you will click here two factor with replication. So when you will click it, then the entire selected value that will come in the input range. And by clicking OK, you can get this big table, and this table shows everything you can have about the information regarding the mutant flies, the hybrids and the wild type, their count, their average number of eggs laid, means all these values will be appearing for rows as well as for column. What has happened? I think it has gone. Hello? हमसे चला गया. Hello? Yes sir. विजुअल है सर, स्क्रीन विजुअल है, स्लाइड दिख रही है मैं सर. That one is let me see, something has let me correct from my side. So actually it was the last slide. Let it appear. Okay, so okay, so in this table you can see in the lower side. Now please see the bottom table where ANOVA is written. What we are observing, that the F value that is 127.16, that is very much high than the table value 3.55. So this shows that there is highly significant difference among the different types, that is I'm sorry, different temperature, because the first one sample and then column and then interaction is there. So sample means rows. There are three samples. Wild type, I'm sorry, rows means temperature. So for temperature there is significant difference. Among columns also, columns means different types of stocks are there, significant difference is there. And interaction means the temperature as well as the stocks.
both show in this particular case significant difference for interaction. It means temperature and mutant types are wild types. The stock environmental conditions, they do not show interaction. But we find that yes, significant difference exists for the number of egg legs by eggs laid by the different types of stock, as well as the temperature that influences. So you can do it in case of replication also. This is one particular case which I have just put over here. I thought that if you people will wish to do it manually, then at least this will be available to you. But I don't think that there is means people will be ready just to do it in short period of time. So I think that this much information would have been very useful to you people, particularly those who are participating in this program. But one has to learn how to do it manually, and mainly I focus on manual aspect. So uh, let me see the screen. I think we can go to the screen, main screen. Thank you, sir. Okay. So now you can ask your participants to go for Yes, sir. queries, and if they. Yes, sir. Thank you very much, sir, for teaching us in such a nice manner about this ANOVA post-hoc test also. It gave us an impression of sitting as if I was sitting in my own MSc class, sir. In this online class, we got the experience and feel of offline class, sir. All your deliberations, sir, detailing the manual method of analysis, as well as by using the Excel software, how they can do this analysis and find the result. It was also very interesting, and I can see the chats from my participants, sir. They most of them have liked it, sir, appreciated you, and they have congratulated you, sir. It was really very nice, sir, that we got another opportunity while in this Corona crisis period to learn so important thing for research purpose, and my participants would definitely have benefited by attending this talk. And now this lecture is open for clarification about curiosities, about confusion. If any of the participants have, we can ask question. Our honorable resource person is online still, so questions can be raised. Sir, one question has been asked by Jyoti Ratna. Okay. Yes, sir, I am reading the question. What are the full forms of abbreviation given in ANOVA table, like MS, F, P value? P terms, sir. MS, F, and P value. MS stands for mean square. Mean square. MS B for between. Mean square between the samples. Then mean square within the sample. Mean is, so these are two terms. SSW, SSB stands for sum of square between the samples. So MS means mean square, mean of squares between the sample. So that is actually full form of this MSB. P is for probability. P is for probability level. F is actually, F value is Fisher's value. F stands for Fisher's value. Fisher was the person who actually gave this suggestion on the calculation aspect. So Fisher's F table stands for Fisher's table. Probability F critical stands for the table value. Critical means is always table value. T critical or F critical, that stands for table value. Thank you, sir. Actually, let me tell you one thing, that this is one of the convenient methods of calculating ANOVA. There could be other methods, means by
calculating mean of individual cases or individual groups, and then doing standard deviation, one can means solve this ANOVA problem. But in this particular case, uh, in most of the books, you know, you will find that this is considered to be one of the convenient methods of calculation. But mean square means we are not calculating here. Only I can tell you that this is the full form of it. We are not in fact calculating individual cases. Means that is the way you can calculate mean square between the samples. So that is stands MSB. Okay. Yes, sir. Uh. Thank you, sir. Another question is, sir, how we can identify when we need to use ANOVA with or without replication? Okay, so uh, suppose that someone performs an experiment and a single value is there. Single value means you have done an experiment and you got its result. Then in another condition you did experiment, you got its result. You have single, you know, data. You have, if you have done it 3 times, then all those 3 values could be separately written, or their average could be written there. If you are writing writing a single value, that will be the average value of 3 experiments. So if that is coming only once, if that value is coming only once, then there will be no replication. See, it's quite simple to understand. If you have performed the experiment once and a single value is coming over there, then no replication will be there. If you have performed the experiment several times, then all those values will have to come in the table. Understand? And even if you have performed it several times, and if you want to make it suppose single without replication, then you can take its average. Do you follow me what I'm saying? Yes, sir. I'm saying that suppose if you have done an experiment 3 times in 3 different conditions, 3 times in 3 different conditions, then you can take average of all those, and a single time that value will be written. Suppose in case of wild type, what we are writing, temperature 20, and wild type, a single figure is being written, 120 is the number of eggs laid. Now that 120 could be the average number of eggs laid. Do you follow me what I'm saying? Yes, sir. If I go to that table, you will find that that value is appearing only once. It may be that you are observing that only once, or you may be observing 3 times, but you are taking average of those 3 times and you are putting it once. So if if it is coming once, then you will be applying without replication. Do you follow me? Yes, sir. Participant is satisfied, sir. The participant has said, thank you very much for explaining this concept, sir. I think there Actually, are I think that there would have been some problem in the internet, because connecting it through mobile phone and then getting smooth going, somehow it has happened. Otherwise, I was much scared actually. And yes, I sir, requested. in the first part of your lecture, see, we experienced, sir, this problem. Your voice was not clear, sir, but throughout the lecture, screen was live and slides were very clearly visible, so we could follow even Actually, the earlier parts, sir. I have made these slides very clear ones, so that Right. if you will have those slides, you can use it in future studies. Means manually I have prepared certain slides, 2-3 pages I have written myself. So if you will go to those aspects, you will get the idea that what I want to convey. Thank you, sir, for explaining so in a lucid manner, in an elaborate manner, this very useful concept, which we often encounter the term in the research paper and also elsewhere also. But for participants and many of us, the concepts are not clear. But through this manual steps and also by use of Excel software, sir, you have explained them very well. And you took pain actually, sir, despite all these kind of difficulties of Corona crisis as well as technical network problem. You spared time us and delivered such a nice lecture and enlightened us about this concept of ANOVA post-hoc test in such a beautiful manner. We are very much thankful, sir,
for your valuable time and for such a nice lecture. Thank you very much, sir. We would always like to have you, sir, as resource person whenever we organize any such conference. Oh, it's my pleasure. It's my weight and value to our such endeavors. I started my career from that place only. So I have so many memories. And privileged, sir. By your contribution, always our such programs become successful. So thank you very much, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So in the later half of this afternoon session, we have one more resource person, and he's from our own IT department, Information Technology Cell, and is Mr. Ashish Srivastava. He is online, and as we have been doing from the very beginning of the workshop, at least one digital tool we try to demonstrate and teach our participants. Today, to teach a digital tool for use of research purposes, we have as a resource person Mr. Ashish Srivastava, and he is going to give information, give lesson to our participant about use of MS Access, as I have been told. So, if Mr. Ashish Srivastava is online, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, and welcome to our platform. Now, this is your time and your platform. Please take your time and give this valuable digital tool information to our participants. Ashish Srivastava, welcome. Sir, my voice is clear, sir? Yes, very clear. Okay. So, first, I want to tell myself, this is Ashish Srivastava, as a senior lecturer from KNIPSS ITC department. I am very thankful to Principal Sir of KNIPSS, as well as organizing secretary of this workshop, and HOD Sir, KNIPSS ITC, and all of the participants. Today, my topic is data analysis with access. I'm just going to share a screen. Sir, screen is visible or not? Hello? Yes, it is visible, Mr. Ashish. You can continue. Okay, sir. Thank you. So, first, I would like to ensure the purpose of this training to increase your skills in analysis and interpretation of the information. Analysis skills and interpretation को increase करना, as well as to increase your ability to report your finding to a variety of audience. How can we create a report on the basis of any particular database after data analysis, as well as to learn how to make evaluation result actionable. On next slide, first, we will clear about the data, because the topic is data analysis. So first, we have to clear about the data. What is the data? Data is a raw fact and unorganized fact that require to be processed to make it meaningful. Actually, data एक तरह का raw fact है जो कि अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, but after the processing it becomes valuable. Data is always interpreted by a human or machine. Any types of calculation or interpretation on the data is performed through a machine or a particular human. Itself, data is meaningless. Data का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, and it contains number, statement, and character in the raw form. Data may contain number, statement, and characters. For एक general example के जरिए समझे, if we see an expression 2 into 2 is equal to 4, and this expression 2 into 2, that is the data.
and 4 that we achieve after the processing of the data. So 4 is the information which we take after the processing on the data. We go through next slide, that is the data analysis. What is the data analysis? In simple words, data analysis is the process of collecting and organizing data in order to draw a helpful conclusion from it. Data analysis is a process, एक ऐसी प्रक्रिया है through which we collect the data, organize the data in a proper order. In the process of data analysis, there may be various analytical things as well as logical reasoning to get information from the data. And the main purpose of the data analysis, that is to find the meaningful information so that the derived knowledge can be used to make information decision. On the next slide, we will discuss 5 steps that is performed through which data analysis can be performed. Data analysis process consists of the following phase that are iterative in nature. First, that is data requirement specification. Second one, data collection. Third one, data processing. Fourth, data cleaning and communication. On the next slide, we will go through first step, that is data requirement specification. The data required for the analysis is based on the question or an experiment. Based on the requirements of those directing the analysis, the data necessary is as input to the analysis that is identified. For example, if we want to analysis on the population, so first from that particular aspect we have to acquire the data. In the same manner, the next step, that is data collection, that is the process of gathering information on targeted, through which we collect data in different modes related to any particular object. The emphasis is on the ensuring accurate and honest collection of the data. तो जो मेजर emphasis होता है, जो मेजर priority होती है, वो यही होती है कि डेटा जो कलेक्ट हो वो accurate collect हो. So data collection ensures the data gathered is accurate. On the next slide, that is the main step, that is the main third step, that is data processing. Data processing that is collected must be processed or organized for the analysis. We know very well when we achieve the information, to achieve the information, we have to process the collected data. In the above example, as we discussed already, 2 into 2 is equal to 4. So 4 is the result or information that comes out after the processing of the data. This includes structuring the data as required for the relevant analysis tool. And to process the data, we can use different of the analysis tools that we will discuss in this session in the form of MS Access, through which we can analyze the data in different manners. There are various other programs or softwares, just like spreadsheet, statistical applications, through which we can perform data analysis or data processing. Next step, that is data cleaning. The processed and organized data may be incomplete. It is possible that processed data is organized or not organized. So it may be incomplete and there may be certain duplicate values and may also contain some errors. So clearing is very necessary. So clearing is the process of preventing and correcting these errors. On the next slide, communication. After the result of the data analysis that are to be reported in a format as required by the user to support their decision and a further action. The information that we receive after the processing of the data, that is to be communicated in the people so that further decision can be, further actions can be performed. On the next slide, we will discuss about the database. There is a
Very big difference between data and database. Data is the raw fact that has no meaning, but database is the collection of related data. Actually database क्या है? Database एक related data का collection है, in which represent some aspect of the real world, typically stored electronically in a computer. Database is a collection of related data objects, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं. डेटाबेस जो हम कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं वो प्रायः टेबल के फॉर्म में होता है, जिसमें कि कॉलम्स एंड रोज का कॉम्बिनेशन होता है या कलेक्शंस होता है. डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जस्ट लाइक MS एक्सेस. इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जरिए हम डेटाबेस मैनेज करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज जस्ट लाइक द कंट्रोलर थ्रू विच वी कैन manage databases, we can manipulate databases, we can add perform editing, any types of editing in the databases. There are different types of database management system, just like here is some example, just like MySQL, Progress SQL, Microsoft Access, Oracle, Zephyr, and Fox Pro. In this session, we will discuss about the Microsoft Access. So before discussing about the access, we are just seeing a particular table in which this is the student database table, जिसमें कि different students से related different informations रखी हुई हैं. जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो टेबल्स के फॉर्म में होती है. जैसे कि यहाँ पर हम डिफरेंट कॉलम्स देख पा रहे हैं, just like first is this, that is serial number, second is name, third is age, and fourth is city. And in the term of database, columns are known as attributes. We can say in this table there are 4 attributes, and these are rows: first row, second row, and third row. As we see, city column contains information about the city, age column contains information about the age, name column contains information about the name, and these data are interrelated to each other. But age is related to name, city is related to this particular name, and serial number is related to this particular name. So according to definition, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि in database is the collection of interrelated data. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि these data are interconnected to each other or interrelated to each other. And these different columns, when combines, then makes a record. Just like serial number is another column, name is another column, age is another column, and city is another column. And when we combine these 4 columns, then it makes a particular record. We can say this is the first record. We can say this is the second record. We can say this is the third record. Okay. So now we will discuss about the access application through which we will make a database. We will learn how to make a database. So I'm just opening MS Access software. So MS Access software, that is the software that comes in the group of MS Office. In MS Office group, there are various type of software just like Word, Excel, PowerPoint. In the same manner, MS Access is also related to MS Office group, and which is actually using for the creating database.
जैसे कि MS वर्ड में हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल होती है। एक्सेल में हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो एक्सेल फाइल होती है या स्प्रेडशीट कही जाती है फाइल को। इसी तरीके से एक्सेस में हम जो भी फाइल बनाते हैं वो डेटाबेस फाइल कहलाती है। जब हम डेटाबेस MS एक्सेस डेटाबेस ओपन करते हैं तो इस तरीके से एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें दिखाई देता है। सर क्या स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? फिर ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, थैंक यू। सो दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ MS एक्सेस। और MS एक्सेस में जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेसेस, सैम्पल टेम्पलेट्स एंड सो मेनी ऑप्शंस। टेम्पलेट्स मीन्स ऑलरेडी बने बनाए डेटाबेसेस होते हैं जो कि हम रेडीमेड तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमें ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मुझे फाइल नेम देना पड़ेगा। सपोज दैट वी वांट टू मेक a database just like KK, so I will write here KK. And if we want to create database with the file name KK, then we have to click on this create button. And by default this file will be saved in document folder. और यदि हम डॉक्यूमेंट फोल्डर के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह पर फाइल सेव करना चाह रहे हैं, डेटाबेस सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर सॉरी और फिर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर फाइल नेम के साथ में ओके पर क्लिक कर देंगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये डेटाबेस स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन और एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन एस बटन। ओके, जब हम एस बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से डेटा सीट व्यू दिखाई देती है और यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो दिखाई देगा सबसे ऊपर टाइटल बार डिस्प्ले होता है जिसमें कि डेटाबेस से रिलेटेड नेम डिस्प्ले किया जाता है एंड आफ्टर दैट मेनू बार जहाँ पर डिफरेंट मेनूज एक्सेसिबल है और फिर यहाँ पर डिफरेंट टैब्स बने होते हैं, रिबन्स बने होते हैं जिसमें कि डिफरेंट ऑप्शंस परफॉर्म करने के लिए ऑप्शंस बने रहते हैं। इफ वी क्रिएट, एज वी नो वेरी वेल, हम डेटाबेस में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टेबल 1 लिख के आ रहा है तो सबसे पहले मैं ओपन व्यू में जाऊँगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और फिर एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर टेबल नेम देंगे टेबल 1। हम यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर टेबल नेम टेबल 1 के फॉर्म में बना रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। टेबल डिज़ाइन करने का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हम व्यू देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज आर हियर, डेटा सीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पायोट टेबल व्यू, पायोट चार्ट व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें स्टूडेंट से रिलेटेड कोई एक डेटाबेस बनाना है तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटाबेस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और जो डिफरेंट कॉलम्स होंगे उसमें क्या क्या किस तरीके का डेटा स्टोर होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं डिज़ाइनिंग फेज में। इसलिए सबसे पहले कोई भी टेबल बनाने के लिए उससे पहले हम डिज़ाइन व्यू में ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं कि टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, डिफरेंट कॉलम्स में डेटा टाइप क्या होंगे और डेटा टाइप के हिसाब से वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में ओपन किया हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर आईडी नंबर लिखा हुआ है। आईडी इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड। चूँकि आईडी जो होगी इंटीजर नंबर के फॉर्म में होगी, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप हम ऑटो नंबर या नंबर सेलेक्ट करेंगे। फिर मैं यहाँ पर सेकेंड कॉलम लेना चाहता हूँ और जिसमें मैं स्टूडेंट से रिलेटेड नेम टाइप करूँगा।
और चूंकि नेम कॉलम जो होगा, नेम कॉलम में जो डेटा वैल्यू फीड होगी, जो वैल्यू फीड होगी वो टेक्सचुअल वैल्यू फीड होगी। और जैसे ही आप यहाँ पर नेम टाइप करने के बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो एक इस तरीके से मैसेज प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पर ओके करने के बाद ये एक्सेसिबल हो जाएगा। दिस इज द डेटा टाइप फील्ड, डेटा टाइप कॉलम। और डेटा टाइप डिफरेंट टाइप से हो सकता है। जैसे यदि हमें नेम इनपुट, नेम कॉलम में चूंकि नेम वैल्यू इनपुट होगी तो नेम वैल्यू टेक्सचुअल वैल्यू ही होगी। यदि मान लीजिए मुझे मोबाइल नंबर इनपुट कराना हुआ किसी पर्टिकुलर कॉलम में, तो मुझे इंटीजर नंबर इनपुट कराना पड़ेगा। इसी तरीके से ये डिसाइड पहले से ही कर लिया जाता है डेटा टेबल डिजाइनिंग के समय कि किस कॉलम में किस तरह की वैल्यूज फिट होनी है, और ये चीज डिसाइड होती है डेटा टाइप से। तो यहाँ पर मैंने टेक्सचुअल डेटा लिखा हुआ है। इसी तरीके से सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एज कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो एज कॉलम से रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे, चूंकि एज कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट होगी, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप टेक्सचुअल नहीं भरेंगे, बल्कि यहाँ पर डेटा टाइप नंबर भरेंगे, क्योंकि एज कॉलम में जो भी वैल्यू फीड होगी वो नंबर फीड होगी। इसी तरीके से यहाँ पर सपोज दैट कि मैं सिटी कॉलम रखना चाहता हूँ, तो सिटी में भी जो भी वैल्यू फीड होगी टेक्सचुअल वैल्यू फीड होगी। और इसी तरीके से सपोज दैट कि यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर रखना चाहता हूँ, तो फ़ोन नंबर में भी जो भी वैल्यू फीड होगी वो नंबर ही फीड होगी। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर ईमेल रखना चाहता हूँ, तो ईमेल में जो भी, ईमेल के लिए जो भी डेटा टाइप होगा वो हाइपरलिंक डेटा टाइप होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से सपोज दैट मैं यहाँ पर एक और भी कॉलम रखना चाहता हूँ, फोटो। तो फोटो के लिए यहाँ पर मैं जो डेटा टाइप लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, दैट इज़ अटैचमेंट। तो इस तरीके से एक टेबल हमने डिज़ाइन कर दिया, और जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, एंड 6 कॉलम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स है। फिर आफ्टर डिजाइनिंग दिस टेबल वी हैव टू इनपुट द डेटा, we have to enter the data. So how can we input the data in this table? So to perform this operation we have to go here data sheet view. अभी तक हम यहाँ पर डिजाइन व्यू में काम कर रहे थे, और अभी हम यहाँ पर डेटा शीट व्यू में काम करने जा रहे हैं। तो डेटा शीट व्यू पर मैं क्लिक करता हूँ। सो डेटा शीट व्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, एंड डू यू वांट टू सेव द टेबल? सो यस, मैं यहाँ पर टेबल सेव कर दूंगा। सो फर्स्ट एज फर्स्ट आईडी नंबर के रूप में फर्स्ट वैल्यू, एंड आफ्टर दैट सपोज दैट कि मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम इनपुट करता हूँ, एंड रिगार्डिंग टू फर्स्ट नेम यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैं इनपुट कर देता हूँ, और सिटी के रूप में सुल्तानपुर, फ़ोन नंबर के रूप में समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से वैल्यूज़, और ईमेल आईडी के रूप में यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज़ ये देखा जा सकता है कि चूंकि ईमेल के लिए मैंने हाइपरलिंक, इसलिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लिंक बन के आ रहा है, और यहाँ पर क्लिक करने से हम इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको डायरेक्टली किसी को भेज भी सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। सो एंड आफ्टर दैट दिस इज द अटैचमेंट। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड अगर यदि कोई फोटो वगैरह यहाँ पर लगानी है, तो अटैचमेंट पर डबल क्लिक करके, जैसे ही हम अटैचमेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से डेस्कटॉप पर जाएंगे, और फिर यहाँ पर जिस भी फोल्डर में जो फोटो लेना होगा, सपोज दैट ये फोटो है, तो यहाँ से मैं ये फोटो अटैच कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट फील्ड पर बढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू मैं फीड करता हूँ। एक 5-6 रिकॉर्ड यहाँ पर हो जाए, सो दैट मैनिपुलेशन कैन बी परफॉर्म। सो और यहाँ पर अटैचमेंट में कोई एक इमेज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट
और यहाँ पर भी एक अटैचमेंट मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि जब फॉर्म इससे रिलेटेड क्रिएट किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली ये सारी इमेज दिखें। यस, और एक फाइनल रिकॉर्ड मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। और फाइनल रिकॉर्ड में अटैचमेंट के रूप में मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐड करने के बाद कोई एक पर्टिकुलर अटैचमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक टेबल डिज़ाइन कर दिया, और जिसमें कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, जस्ट लाइक आईडी, नेम, एज, सिटी, फ़ोन नंबर, एंड देयर आर 5 रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कैसे कोई टेबल क्रिएट की जाएगी। बॉटम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बटन्स बनी हुई हैं, और जिस पे हम क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 टू लास्ट रिकॉर्ड। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड से लास्ट रिकॉर्ड तक नेविगेट करते जाएंगे। और दिस इज द फर्स्ट बटन, यहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्ट हम फर्स्ट बटन पर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्ट हम लास्ट बटन पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हमें कोई न्यू रिकॉर्ड फीड करना हुआ तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पर, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और कोई न्यू एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। So this was how to create a table in MS Access, and there are some extra facilities that we can use, just like suppose that कि हम different columns पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ filters लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ इनको ऑर्डर वाइज भी चेंज कर सकता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सपोज दैट वी हैव टू ऑर्डर इट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, so we have to click on this button, and after that we have to click here sort smallest to largest। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये all the data in this table will be adjusted according to smallest to largest। इसी तरीके से हम यहाँ पर largest to smallest, या suppose that कि we have to filter out these data। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ जो कि अयोध्या से रिलेटेड हो, तो सिटी कॉलम पर ये जो फिल्टर बना हुआ है यहाँ पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पर जितनी फील्ड सेलेक्टेड हैं, जितने चेक बॉक्स, यहाँ पर मैं सभी को हटा दूंगा, सिर्फ अयोध्या यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी कर सकता हूँ, और सिर्फ अयोध्या से रिलेटेड ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप से डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, और फिर क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन्स आर अवेलेबल हियर, जस्ट लाइक फॉर्म, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, टेबल्स, टेम्पलेट्स एंड मैक्रोस। सो सबसे पहले हम फॉर्म देखेंगे, फिर हम यहाँ पर रिपोर्ट देखेंगे, फिर हम यहाँ पर क्वेरी देखेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, जस्ट लाइक फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म विजार्ड। सो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू क्रिएट द फॉर्म। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यस बटन पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जितने भी रिकॉर्ड हमने फीड किए हुए हैं सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे। एंड दिस इज द बटन थ्रू विच वी कैन नेविगेट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, something like that। So this is the simplest form. This is the simplest form that we can design in MS Access. This is the first method. Another method, that is the form wizard. Form wizard, this is the another method through which we can define the form, design the form. And we have to you click on the form wizard. So जैसे हम form wizard पर click करेंगे, so कुछ इस तरीके से फॉर्म विजार्ड ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस टेबल से रिलेटेड आपको फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पर चूंकि टेबल 1 मैंने लिया हुआ है, टेबल 1 नाम से टेबल है, इसलिए टेबल 1 यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
डेटाबेस बनाते समय एक से अधिक टेबल पर भी काम किया जा सकता है। यदि यहाँ पर एक से अधिक टेबल्स होती हैं तो वो सभी हमें इस लिस्ट में दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही टेबल लिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर टेबल 1 सेलेक्ट किया हुआ है। और अवेलेबल फील्ड्स ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स जो कि हमने टेबल बनाते समय इनपुट किया था, डिज़ाइन किया था, वो फील्ड्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इन्हें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड पर क्लिक करना पड़ेगा और इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड फील्ड टेक्स्ट बॉक्स में ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से नेम सेलेक्ट करना है तो नेम पर, इसी तरीके से एज सेलेक्ट करना है तो एज पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से सिटी सेलेक्ट करना है तो सिटी पर, इसी तरीके से फ़ोन सेलेक्ट करना है तो फ़ोन पर, और इसी तरीके से ईमेल, और इसी तरीके से फ़ोटो। So these are the 7 fields, 1 2 3 4 5 6 7 fields जिस पर कि जो कि हमें फॉर्म में रखने हैं। तो इस तरीके से 5 फील्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट हो गई और फिर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो कोई यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ ऑप्शन दिखाई देते हैं। व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म। तो आपसे कहा जा रहा है कि किस तरीके का लेआउट हम फॉर्म के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ लेआउट दिए गए हैं, कॉलम, टेबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाई। सो जनरल लेआउट दैट वी ऑफन यूज दैट इज कॉलम लेआउट। हम यहाँ पर टैबलर भी यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई भी यूज कर सकते हैं, डेटा शीट भी यूज कर सकते हैं। सो वी विल चूज कॉलम लेआउट। सो कॉलम पर क्लिक किया और एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। और जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टेबल व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर द फॉर्म के लिए क्या टाइटल देना है। तो यहाँ पर हम टाइटल लिख सकते हैं। सपोज दैट कि हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं फॉर्म 1। तो इस तरीके से फॉर्म 1 हमने टाइप कर दिया। हम कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड आफ्टर दैट there are 2 check boxes, option buttons of first it open the form to view the entire information, या फिर सेकंड ऑप्शन मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन। तो हमें फॉर्म डिज़ाइन मॉडिफाई नहीं करना है। मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से हमें ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड देख पा रहे हैं और यहाँ पर बटन्स बनी हुई हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट 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 इस तरीके से डिफरेंट रिकॉर्ड्स के थ्रू हम नेविगेट। और इसी तरीके से यदि हमें कोई नया रिकॉर्ड इनपुट करना हुआ तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम न्यू बटन पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड इनपुट कर सकते हैं। After that we have to add the photo here. So double click here, and when you double click here, so this window appears, and after that we have to click on add and we have to select a particular photo. Suppose that we select this photo and after that we have to okay, we have to click on okay. तो इस तरीके से यहाँ पर number of records add हो जाएंगे। So this is the form designing through form wizard. And after that we have to discuss about the how to create report regarding to the form. So this is the form and now we are just going to create a report. So to create a report we have to click on create button, and after that we there are different types of reports just like query, form, report. So you can see these are a report tab, and in this tab there are various options to create reports. First is report, simple report, and after that report design, blank report, and report wizard. So we can use different options. So firstly we will discuss report wizard, report. So report बटन पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे ही हम रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये एक रिपोर्ट बनके सामने आ जाती है। This is the simple report. This is the simple form to create how to create report in MS Access. We can create report in different other methods. Suppose that we have to create report through report wizard. So we have to click here report wizard,
And after that, report result dialog box is displayed here. And फर्स्ट इज दैट इज टेबल और क्वेरी। तो यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि किस टेबल से रिलेटेड हमें रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, टेबल 1, सो यहाँ पर मैं टेबल 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और रिपोर्ट में कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं, तो यहाँ पर इतने कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टेबल 1 में इतने कॉलम्स हमने बनाए हुए थे। सो यहाँ पर जो भी कॉलम्स रिपोर्ट में रखने हैं उन कॉलम्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज दैट आईडी नंबर, इसी तरीके से नेम, इसी तरीके से एज, इसी तरीके से सिटी, इसी तरीके से फ़ोन, इसी तरीके से ईमेल और फोटो। So these are different columns which we have to place in the report, and after that we have to click here on next button. So after clicking on the next button, report wizard is displaying the report, and in this report there are different attributes only. So if this is correct, so we can proceed, and we have to click next button. और जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम है, आईडी है, तो क्या हम किसी एट्रीब्यूट में जो डेटा है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आईडी जो कि न्यूमेरिकल डेटा है फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में, तो यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वो पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर असेंडिंग पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से यदि हमें नेम असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम ए टू जेड, तो हम पर्टिकुलर वो फील्ड या एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी चीज़ें आप इस तरीके से सेलेक्ट करके ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो उस फील्ड से में जो भी डेटा होगा वो अकॉर्डिंग टू दैट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल आईडी लेता हूं और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करता हूं। हम यहाँ पर जितने भी फील्ड्स हैं अलग अलग फील्ड्स में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। सो मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट विजार्ड में हमसे ये कहा जा रहा है कि जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लेआउट होगा वो किस तरीके का होगा। तो बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेआउट। First is column, second is tabular, third is justify. So generally we uses columnar or tabular. So मैं यहाँ पर tabular लेता हूँ और after that यहाँ पर orientation के बारे में पूछा जा रहा है। We know very well there are 2 types of orientation related to page. First is portrait and second is landscape. So portrait that is vertical and landscape that is horizontal. So मैं यहाँ पर portrait orientation लेता हूँ और फिर next बटन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर टाइटल फॉर द रिपोर्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट 1 राइट करता हूँ एंड आफ्टर दैट प्रीव्यू द रिपोर्ट एंड मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि हमें प्रीव्यू देखना है तो हम प्रीव्यू रिपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन बटन पर क्लिक करके फिनिश पर क्लिक कर देंगे। और यदि हमें रिपोर्ट में किसी भी तरह की डिजाइन परफॉर्म करनी है तो हम यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई डिज़ाइन परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें रिव्यू देखना है, प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बटन पर क्लिक करूँगा और फिनिश बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैश के फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे करेक्ट होगी, ये चीज़ यहाँ पर व्यू बटन में हम देख सकते हैं कि इस समय हम रिपोर्ट व्यू मोड में काम कर रहे हैं। यदि मुझे ये चीज़ करेक्ट करनी है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लेआउट व्यू में जाना पड़ेगा। तो लेआउट व्यू में मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जब हम रिपोर्ट व्यू में रहेंगे तो हम ये चीज़ें डायरेक्टली इसको करेक्ट नहीं कर सकते। इसके यदि मुझे इसमें किसी भी तरह का कोई एडिटिंग परफॉर्म करना है तो मुझे यहाँ पर व्यू ऑप्शन में जाना पड़ेगा और लेआउट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर दे रहा हूँ एंड एनी टाइप्स ऑफ एडिटिंग विच वी हैव टू परफॉर्म that we perform go through this layout view। और इसी तरीके से ये जो फोटोज़ हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर दे रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें एक ही पेज में एडजस्ट हो जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ पर व्यू में मुझे लेआउट व्यू पर
जाना पड़ेगा, तभी हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं एज थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ लेफ्ट इंडेंट पे, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने कुछ सेटिंग यहाँ पर कर दिया हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गो रिपोर्ट व्यू, सो वी हैव टू क्लिक हियर ऑन द रिपोर्ट व्यू। तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट व्यू में क्लिक करता हूँ और इस तरीके से एक रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। सो इस तरीके से हमने देखा कि फॉर्म कैसे क्रिएट होगा और रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ क्वेरी, वी कैन इम्प्लीमेंट अ क्वेरी इन द डेटाबेस। क्वेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ filter out some specific data from the database. We just querying उनके बारे में डिस्कस करना है, या 25 से ग्रेटर एंड 30 से कम के जो स्टूडेंट है ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे इस तरीके के जो रिकॉर्ड एक्सेसिंग किए जाते हैं, तो उनके लिए हम क्वेरी यूज करते हैं। क्वेरी मीन्स जस्ट क्वेरिंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस। सो हाउ कैन वी क्रिएट क्वेरी? सो क्वेरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम क्वेरी टैब पर जाएंगे। क्वेरी टैब पर देयर आर टू ऑप्शंस, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन। तो यहाँ पर क्वेरी विजार्ड पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से न्यू क्वेरी, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, find duplicates query wizard, and find unmatched query wizard. So first we have to discuss simple query wizard. This is the simple method to perform applying the query. So we will click here and after that we go through OK button. और जैसे ही OK बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप किस टेबल से रिलेटेड क्वेरी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने टेबल 1 क्रिएट किया हुआ है, इसलिए टेबल 1 से रिलेटेड मैं क्वेरी टेबल 1 पर परफॉर्म करूंगा। और कौन कौन सी फील्ड हम क्वेरी में रखना चाहेंगे, तो चूंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड हैं, तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ। और फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए नेम पर क्लिक करूंगा, इसी तरीके से एज पर क्लिक करूंगा, सिटी पर क्लिक करूंगा, फोन पर क्लिक करूंगा और इसी तरीके से ईमेल पर क्लिक करूंगा। और इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर वुड यू लाइक ए डिटेल और समरी क्वेरी, तो यहाँ पर मैं डिटेल पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा। यदि मुझे क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, या यदि मुझे डिज़ाइन पर क्लिक करना है या क्वेरी में से रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मुझे मॉडिफाई क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिर फिनिश बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेबल 1 क्वेरी ये लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ या यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पर जाता हूँ। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे। तो जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। जिस टेबल पर हमें क्वेरी लगाना है उस टेबल से रिलेटेड नंबर ऑफ फील्ड्स यहाँ पर लिख के आ जाती हैं, बन के आ जाती हैं। जैसे इतनी फील्ड्स हमने सेलेक्ट किया हुआ था, आईडी, नेम, एज, सिटी, फोन, ईमेल, फोटो, और हर एक फील्ड्स यहाँ पर हमें दिखाई देती है, जैसे कि आईडी, नेम, एज, सिटी, फोन, ईमेल। और यहाँ पर जो टेबल हमने सेलेक्ट किया हुआ था, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 1, टेबल 1, तो चूंकि सभी फील्ड्स टेबल 1 से रिलेटेड हैं इसलिए यहाँ पर टेबल 1 बन के आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक क्वेरी लगानी है जिसमें मैं सभी फील्ड्स नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ आईडी नंबर, नेम, एज और सिटी देखना चाहता हूँ, फ़ोन नंबर और ईमेल नहीं देखना चाहता। तो ऐसे केसेस में मुझे फ़ोन नंबर और ईमेल पर यहाँ पर जो चेक बना हुआ है ये चेक यहाँ से हटाना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस पर मुझे चेक रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर चेक किया हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये दोनों ऑप्शन से हटा दिया हुआ है। तो चलिए हम एग्जीक्यूट कराते हैं क्वेरी और देखते हैं कि क्या मुझे ये 4 फील्ड्स दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर रन ऑप्शन बना हुआ है और रन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 फील्ड्स यहाँ पर दिख जाएंगे।
इसी तरीके से मैं दोबारा क्वेरी में विजार्ड में जाता हूं और क्वेरी विजार्ड में जाने क्वेरी व्यू में जाने के लिए मुझे यहाँ पर टेबल 1 क्वेरी पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और डिज़ाइन व्यू पर जाना पड़ेगा। सपोज दैट कि यहाँ पर मैं सिटी के रूप में सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट सुल्तानपुर से रिलेटेड हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिटी कॉलम में जाऊँगा और यहाँ पर क्राइटेरिया में डबल कोटेशन में मैं यहाँ पर लिख दूंगा सुल्तानपुर, कुछ इस तरीके से। तो ऑल द स्टूडेंट्स विच आर रिलेटेड टू सुल्तानपुर दैट विल बी अपीयर इन द क्वेरी फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने सुल्तानपुर टाइप कर दिया और फिर मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट सुल्तानपुर से रिलेटेड होंगे वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से सपोज दैट कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कि प्रयागराज से रिलेटेड हैं, तो मुझे यहाँ पर डबल कोटेशन में प्रयागराज लिखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट प्रयागराज से रिलेटेड होंगे वो स्टूडेंट यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर मैं रन बटन पर क्लिक करता हूँ तो प्रयागराज से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से हम डिफरेंट फील्ड्स में क्वेरी लगा सकते हैं। यदि मुझे ये क्वेरी लगाना हो कि ऐसे स्टूडेंट जो कि 25 ईयर से ग्रेटर है, ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया में हम जाएंगे और ग्रेटर देन 25 कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर ग्रेटर देन 25 पर क्लिक करें, 25 राइट करेंगे और क्वेरी यहाँ से रन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट 25 से ज़्यादा होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरीके से सपोज दैट कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट 30 ईयर से कम है, मीन्स लेस देन 30 है, वो स्टूडेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो क्राइटेरिया में ये चीज़ हमें ये स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, लेस देन 30, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन रन बटन। और जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे तो 30 से कम जितने भी स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरीके से सपोज दैट कि हम ये ऐसे स्टूडेंट देखना चाहते हैं जो कि यहाँ पर ग्रेटर देन 25 हैं एंड लेस दैन 30 हैं, ग्रेटर देन 25 या फिर 26 एंड लेस देन 30। तो यहाँ पर मैं ये पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा एंड के साथ में और यहाँ पर रन बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो 25 और लेस देन 30 ये कुछ 26, अच्छा आई थिंक सिनेरियो में कुछ पहले मैं एक बार ऐसे चेक करता हूँ और फिर यस ओके। So here is only one student that is greater than 25 and less than 30, that is 26. So यहाँ पर डिज़ाइन भी मैं जाता हूँ और greater than 22 and less than 30. So run, so yes, this is the greater than 22 and less than 30. So इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके से क्वेरी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। कैन यू हियर मी सर? Yes, I can very clearly. Thank you sir. And I think all the participants are listening your voice very clearly. Thank you sir. Yes, please continue. Okay sir. So it was the method through which we can create a query and we can implement query in different scenarios. And so आज के सेशन में हमने ये देखा कि टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और क्वेरी किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। सो आई विल स्टॉप माय सेशन। सो Okay, Mr. Ashish, thank you very much for this nice presentation. Thanks, sir. And teaching my participants a new application, MS Access. Few participants would be aware beforehand. Mostly people use MS Excel. Some people, I think, know about the use of MS Access for the table creation, form creation, and different kind of inquiries. Now, I would like my participants to
ask questions. If they have any curiosity, they want some clarification, they can ask my resource person, Ashish ji. Yes, sir. One participant has not asked, but rather congratulated you for this nice presentation. Thanks, He sir. has found your lecture very helpful for himself. Thank you, sir. One question I have, Mr. Ashish. Yes, sir. How this application is different from MS Excel? If one has to do some kind of table formation and other things that you showed actually. Can we do all those things in the Excel also? Yes, sir. Are some specific functions can be performed only by MS Access? In what way this is different actually? Yes, sir. Actually, Excel provides some mathematical and accounting facilities, but it is not only specified for the database operation or database task. But MS Access is totally, it has full functionality that is related to the database, or that is through which creation or any types of thing. We cannot make create a form or create a report in the Excel, but we can create that things very smoothly by using MS Access. Okay. For database creation, MS Access is the best. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One participant is asking some question. I see Mamta Baghel. Yes, sir. Please. Mamta Baghel, can you hear me? Yes, you can ask a question. आवाज और तेज बोलिए, यहाँ तक आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। Ms. Baghel, your voice is not reaching us. A resource person is unable to hear you. Instead, you type your question in the chat box, we will get it. In the question and answer section. One more question has come up from one participant. Yes, sir. The question is, sir, when we need to create that database? कब जरूरत है हमें इसको create करने की? Sir, as you know, in current time there are different fields which we uses, and all the fields cannot be survived without using databases. For example, हम इंटरनेट यूज करते हैं, वहां पर भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है. मोबाइल सिस्टम यूज करते हैं, वहां पर भी पूरा मोबाइल आर्किटेक्चर, वहां पर भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है. आई थिंक every fields, approx 95% fields which cannot survive without maintaining database. So this is very necessary to gain a knowledge about the database. Without databases, we cannot perform any types of, we cannot survive actually in any field. फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पूरा जो हमारे पास स्टूडेंट्स का आर्किटेक्चर है, जो स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है, तो उनको भी अच्छे से मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के, मैनिपुलेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड ए प्रॉपर डेटाबेस, ताकि हम किसी भी रिकॉर्ड को ईजिली अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाएँ. यदि हमारे पास 10,000 स्टूडेंट हैं और किसी मान लीजिए कोई स्पेसिफिक सिनेरियो के बेसिस पर हमें ऐसे स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है जो कि सुल्तानपुर से रिलेटेड हो, तो ऐसे केसेस में मैनुअल तरीके से वो काम करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन बाय यूजिंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, वी कैन इजिली विद इन सेकेंड परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो. Thank you, Mr. Ashish. Thank One you, sir. more participant is interested in asking question. Yes, sir. Yes, sir. So please entertain her question. And Yes, sir. she is Anita. Anita, can you hear me? Anita, can you hear me? You can ask your question. Unmute yourself. First unmute yourself. Yes, now ask your question. Good evening, sir. Good evening. I am Anita Yadav, student of Professor Sandeep Malhotra and research scholar of parasitology. Sir, your tools are very useful for me. Thank you. Thank you, ma'am.
I have no question. All tools, Google Forms, Google Docs, anything. I design Google Docs, and today this tool is much more useful. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for finding it beneficial and congratulating my resource person. So is there any other question? Yes, sir. No, thank you very much. ममता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप पहुंच रही है सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो ममता, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर, चैट बॉक्स में चेक कीजिए प्लीज। चैट बॉक्स से? हाँ जी, चैट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं सर। अच्छा, हाँ, चैट बॉक्स में क्वेश्चन दिया है इन्होंने। मिस्टर आशीष, आपके लिए क्वेश्चन है। Yes, sir. वीडियो आर अटैच्ड आर नॉट इन MS Access? Videos. Videos. Actually, sir, when we create form or report, then form or report we only display images, only attach images. Attached images. Yes, sir. So video is not possible there. Attachment of video is not permissible. Images you can have. Yes, sir. Got the answer? Yes, sir. I have two more questions. I have two more questions, sir, in chat box. That you have typed. Yes, sir. We have also give validations such as number, text, hyperlink, etc. When we type number in text, it doesn't neglect. Please explain. Ashish, take the question from chat box. Yes, sir. Ashish, sir, take the question from chat box. Mamta Baghel is a participant. Please Okay. find the questions from chat box. Last message. Yes, sir. Take the question of Mamta Baghel from the chat box. Did you see the chat box? आपके स्क्रीन पर चैट बॉक्स दिख रहा है ना? नहीं, चैट बॉक्स तो नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप इसको सुनिए और बच्चे का समाधान करिए। पार्टिसिपेंट्स का ये कहना है कि हम नंबर, टेक्स्ट, हाइपरलिंक एक्सेट्रा जो है चीजें, इनको हमको वैलिडेट करना पड़ता है। जब हम नंबर टाइप करते हैं टेक्स्ट में तो वो निग्लेक्ट नहीं करता, क्यों? When we type number in text, it doesn't neglect. ये क्वेश्चन है बच्चे का। अच्छा, when we type number in the text, it does not neglect. Actually, जैसे कि आप जनरली नंबर टाइप करती हैं और वो निग्लेक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर एक्चुअली क्राइटेरिया जब तक हम नहीं लगाएंगे कि हमें एक क्राइटेरिया लगाना पड़ता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में हम सिर्फ नंबर ही, वो एक बाउंडेशन वहाँ पर लगाना रहता है, क्राइटेरिया लगाना पड़ता है कि वहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, वहाँ पर नंबर ना हो। इसीलिए जब आप नंबर इनपुट करते हैं तब भी वहाँ पर नंबर हो जाता है। सो वी हैव टू फर्स्ट सेट द क्राइटेरिया कि यहाँ पर इस फील्ड में पर्टिकुलर टेक्स्ट ही होगा, टेक्स्ट ही डेटा टाइप की वैल्यू वहाँ पर होनी चाहिए। इसी तरीके से जब तक आप क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यदि टेक्स्ट के बजाय वहाँ पर नंबर भी दे देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। Okay, the same participant has asked one more question, Mr. Ashish. Yes, sir. What are advanced features of MS Access in comparison of other DBMS? Yes, sir. Advanced feature, as we see, as we know, MS Access provide a graphical user interface, GUI interface. In comparison, if we discuss about the SQL, so SQL does not provide so sufficient, smooth environment as compared to MS Access. MS Access provide different types of menus, different types of options to perform different tasks. So Mamta Baghel got the answer. सर, क्राइटेरिया कैसे सेट होगा वो बता देंगे एक बार को? क्राइटेरिया का मेरे को नहीं समझ आया। Hello. Actually, she has another part of the same question, and she is requesting कि sir criteria set करके दिखाइए please. I think she should contact you. You have given your this WhatsApp number Sir, later.
Yes, sir. My WhatsApp number is this. So, Mamta, I would like you to stop here. A series of questions you have asked, no doubt, and all the questions have been answered by the resource person to your satisfaction. Further explanations and new questions, if come to your mind, you can contact on his WhatsApp number. So from my side and from the side of all participants, I extend my sincere thanks to my own colleague and today's resource person, Mr. Ashish Srivastav, for making this nice, useful presentation for my participants. And the questions